Hello. Hello Python developers. Let's make this type of project by using Python. This is our new project attendance management system with using OOP concept of Python programming. We will use some features of OOP concept. This is called class and object constructors and encapsulation list of objects and menu driven programming. Okay, तो हम इसमें कुछ methods बनाने वाले हैं, साथ में कुछ कंस्ट्रक्टर भी यूज करने वाले हैं और मेन्यू ड्रिवन सिस्टम यूज करेंगे प्रिंट करने के लिए all of the entities. Okay, so let's start by using VS Code. Okay, now we are in VS Code and let's create a folder for our project. Our project name is attendance management system. So write here name SMS attendance management management system. Okay, SMS your project name and then create a file for our project. So it is also SMS attendance only we will write only attendance Python attendance.python py. So and control plus V to then write here our project name. Our project name is attendance management system. Okay, so we have write it here, and after that we need some classes to create this. And first we snooze this GitHub Copilot because this always suggests us some suggestions that will help you to write your Python program, but we haven't need now. Okay, so let's create a class name for student. Okay, first we create a class for students, then create a constructor, define first def init सेल्फ कॉमा कुछ हमें एंटिटीज की जरूरत होगी वो होगी पहला हमें रोल नंबर देन वी नीड roll number and name. Okay, these two entities are enough for this constructor. So self dot roll number equal to roll number and then self dot name equal to name. Okay, and we need some more things, total classes and for attended classes. So we will take total classes equal to 0 first and self dot attended classes equal to 0 also. Okay, after that create a method for mark attendance. Okay, attendance self comma status. Okay, status भी हमें चेक करना होगा कि अटेंडेंस लगी है या नहीं. Okay, so first this attendance we need if condition or self dot total classes is equal to plus equal to 1. Okay, if status dot लोअर फंक्शन लगाएंगे, किस लिए लगाते हैं हम लोअर फंक्शन का यूज करते हैं क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस होती हैं. अगर आपने कैपिटल पी लिखा तो ये अलग वेरिएबल माना जाएगा और अगर आपने स्मॉल पी लिखा तो वो अलग वेरिएबल माना जाएगा. ओके, इज इक्वल टू पी कॉलन सेल्फ डॉट अटेंडेड क्लासेस प्लस इक्वल टू हो जाएगा 1. ओके, आफ्टर दैट क्रिएट वन मोर मेथड फॉर अटेंडेड अटेंडेंस परसेंटेज. परसेंटेज के लिए सेल्फ ओनली यूज करेंगे. इफ सेल्फ डॉट टोटल क्लासेस इज इक्वल टू लेंगे 0, देन क्या होगा रिटर्न क्या करेगा 0. आफ्टर दैट इन अदर केस क्या रिटर्न करेगा सेल्फ डॉट अटेंडेंस क्लासेस डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा टोटल क्लासेस से डिवाइड हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से. ओके, देन हम डिस्प्ले मेथड का यूज़ करेंगे. डिस्प्ले तो डिस्प्ले सेल्फ कॉलन डिस्प्ले कैसे करेंगे प्रिंट करेंगे एफ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे और सेल्फ डॉट सबसे पहले प्रिंट करना है हमें रोल नंबर देन बैकस्लैश टी सेल्फ डॉट नेम. ओके, फर्स्ट वी टेक सेल्फ डॉट attended classes backslash t and self dot total classes.
Okay, after that create a main class. This is not main class, this is for attendance system colon. Okay, def init self colon self dot self dot total classes. So this we will create a array for students, empty array to store values. Okay, so self dot students, then def create a method for add student. स्टूडेंट ऐड करना है तो सेल्फ ओनली यूज करेंगे कॉलन. ओके, तो स्टूडेंट ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, रोल नंबर एज अ इनपुट. तो इंटीजर टाइप का होगा इनपुट, एंटर रोल नंबर कॉलन, देन रोल नंबर के बाद नेम इक्वल टू इनपुट इन डबल क्वाड एंटर नेम, या एंटर स्टूडेंट नेम कर देते हैं. ओके, स्टूडेंट नेम. पानी देख लो, पानी देख लो, है क्या नहीं वो पानी, वाह वाह. ऐड स्टूडेंट. ओके, स्टूडेंट इक्वल टू स्टूडेंट रोल नंबर कमा नेम, स्टूडेंट डॉट सेल्फ डॉट स्टूडेंट डॉट अपेंड स्टूडेंट. ओके, प्रिंट कर देंगे स्टूडेंट एडिट सक्सेसफुली. ओके, स्टूडेंट एडिट सक्सेसफुली. आफ्टर दैट वन मोर मेथड फॉर मार्क अटेंडेंस सेल्फ कॉलन. अटेंडेंस मार्क करने के लिए सबसे पहले रोल नंबर चाहिए होगा स्टूडेंट का, रोल नंबर इक्वल टू इंट इनपुट एंटर स्टूडेंट रोल नंबर कॉलन. ओके, फॉर लूप लगाएंगे फॉर स्टूडेंट इन सेल्फ डॉट स्टूडेंट्स, देन क्या होगा, इफ स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर, देन क्या होगा, स्टूडेंट ऐड करना है तो हमें सबसे पहले स्टेटस चाहिए होगा. स्टेटस एज अ इनपुट इनपुट एंटर स्टूडेंट स्टेटस. स्टेटस कहाँ मिलेंगे हम, प्रेजेंट और अपसेंट में, प्रेजेंट एंड अपसेंट. ओके, देन इनपुट ले लिया, देन हम स्टूडेंट डॉट मार्क अटेंडेंस स्टेटस स्टेटस सॉरी. मिस्टेक्स हो रही हैं, प्रिंट करेंगे अटेंडेंस मार्क. आफ्टर दैट रिटर्न स्टेटमेंट एंड देन प्रिंट करेंगे नो स्टूडेंट रिकॉर्ड. ओके, क्रिएट वन मोर मेथड फॉर व्यू स्टूडेंट व्यू अटेंडेंस. ओके, अटेंडेंस सेल्फ कॉलन. अटेंडेंस चेक कर व्यू करने के लिए हमें रोल नंबर की फिर से जरूरत पड़ेगी, तो रोल नंबर लेंगे एज अ इनपुट, अगेन इनपुट एंटर स्टूडेंट रोल नंबर फॉर स्टूडेंट इन सेल्फ डॉट स्टूडेंट्स कॉलन, इफ स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर, देन क्या होगा, स्टूडेंट डॉट डिस्प्ले कर देगा स्टूडेंट को. ये मेथड कॉल होगा स्टूडेंट डिस्प्ले वाला.
ओके, डिस्प्ले कर देगा। देन रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, आफ्टर दैट प्रिंट कर देंगे नो स्टूडेंट रिकॉर्ड। ओके, नो स्टूडेंट रिकॉर्ड। क्रिएट वन मोर मेथड फॉर डेफ कैलकुलेट कैलकुलेट परसेंटेज सेल कॉलन। परसेंटेज भी कैलकुलेट करने के लिए हमें रोल नंबर की ज़रूरत तो पड़ेगी। रोल नंबर इक्वल टू इंट इनपुट एंटर स्टूडेंट रोल नंबर कॉलन के फोर स्टूडेंट इन सेल dot students colon if student dot roll number is equal to roll number colon then क्या होगा स्टूडेंट। देन हम क्या करेंगे, परसेंट इक्वल टू स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट क्लास में हमने एक मेथड बनाया था क्या, अटेंडेंस परसेंटेज, तो इसी का यूज़ करेंगे। डॉट अटेंडेंस परसेंटेज। प्रिंट करेंगे एफ स्ट्रिंग के थ्रू अटेंडेंस परसेंटेज कॉलन परसेंट कॉलन डॉट टू एफ एंड परसेंट साइन। ओके, के देन रिटर्न स्टेटमेंट, देन प्रिंट करेंगे स्टूडेंट नॉट फाउंड। ओके, आफ्टर दैट डेफ वन मोर मेथड फॉर स्टूडेंट, या डिस्प्ले स्टूडेंट कर देते हैं, डिस्प्ले स्टूडेंट। स्टूडेंट डिस्प्ले कैसे करेंगे, सेल कॉलन, डिस्प्ले करने के लिए हम पहले नंबर लेंगे इफ नॉट सेल्फ डॉट स्टूडेंट्स कॉलन, प्रिंट करेंगे नो स्टूडेंट रिकॉर्ड। देन रिटर्न कर देंगे, आफ्टर दैट प्रिंट करेंगे एक्स लेस एन, सबसे पहले रोल नंबर एक्स लेस टी, नेम एक्स लेस टी एंड परसेंटेज। ओके, देन प्रिंट करेंगे हाइफन हाइफन। ओके, फॉर लूप लगाएंगे फॉर स्टूडेंट इन सेल्फ डॉट स्टूडेंट्स कॉलन स्टूडेंट डॉट डिस्प्ले। ओके, तो इस मेथड के थ्रू डिस्प्ले हो जाएगा स्टूडेंट रिकॉर्ड। ओके, तो अब हम मेन क्लास बनाएंगे, मेन क्लास का ऑब्जेक्ट। ओके, अटेंडेंस सिस्टम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे ऑब्जेक्ट, अटेंडेंस ले लेते हैं इक्वल टू अटेंडेंस सिस्टम। ओके, ऑब्जेक्ट बना लिया। आफ्टर दैट हम इफ फाइल ट्रू वी विल टेक सम inputs, first we print backslash n print attendance management system। ओके, देन प्रिंट करेंगे फर्स्ट केस क्या है हमारा, ऐड करना है स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट। देन सेकंड केस क्या है हमारा, सेकंड केस है मार्क अटेंडेंस। ओके, प्रिंट करेंगे थर्ड केस क्या है हमारा, अटेंडेंस परसेंटेज। देख लेते हैं एक बार थर्ड केस क्या लिया था हमने, व्यू अटेंडेंस, व्यू अटेंडेंस।
attendance view की, then calculate percentage, print. Fourth case, calculate percentage. After that, one more case. Fifth case, display students. Display students. स्टूडेंट डिस्प्ले किया, देन प्रिंट करेंगे. सिक्स केस फॉर एग्जिट. फॉर एग्जिट. ओके. अब हम चॉइस लेंगे. चॉइस इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर चॉइस कॉलन. देन इफ choice is equal to 1 colon student dot attendance dot add student. फर्स्ट केस में add student होगा. देन elif choice is equal to 2 attendance dot. देन हमें क्या करना है, मार्क अटेंडेंस. ओके. सेकंड केस, देन elif choice is equal to 3. थर्ड चॉइस अटेंडेंस view attendance dot view attendance. Okay, then elif choice is equal to fourth choice attendance dot calculate percentage. Elif choice is equal to 5, then attendance dot display student. Elif choice is equal to 6 choice attendance dot. सिक्स चॉइस तो हमारी एग्जिट है, तो इसमें केवल ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे और प्रिंट भी कर देंगे साथ में. एग्जिट में तो प्रिंट करेंगे स्टूडेंट या सिस्टम क्लोज. देन ब्रेक स्टेटमेंट एंड एल्स स्टेटमेंट. एल्स प्रिंट करेंगे इनवैलिड choice. Okay, so these are cases with this student attendance management system. Okay, system closed, and now run our project. Okay, will take some time. Then first we will take student roll number 100. Okay, student name Rahul. Student ऐड हो गया है. Then एक और student ऐड कर लेंगे. Roll number 200. Student name मोहित. ओके, दो स्टूडेंट ऐड कर लिए. देन मार्क अटेंडेंस करेंगे स्टूडेंट रोल नंबर की 100. ओके, प्रेजेंट है, प्रेजेंट कर दिया. ओके, अटेंडेंस मार्क हो गई. अभी हमने सेकंड स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क नहीं की है. अब व्यू अटेंडेंस करेंगे थर्ड. ओके, तो इसकी अटेंडेंस मार्क हो चुकी है. थर्ड केस में रोल नंबर 100 की व्यू अटेंडेंस करेंगे. स्टूडेंट की अटेंडेंस व्यू करेंगे, इसकी एक रोल नंबर की 100 की एक अटेंडेंस है. ओके, मार्क हो गई. देन कैलकुलेट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे. फोर्थ चॉइस. ओके, 100 की चॉइस परसेंटेज निकालेंगे तो इसकी 100% आएगी. अगर हम फिर से फोर्थ चॉइस लेंगे कैलकुलेट परसेंटेज, और हमने सेकंड जो स्टूडेंट लिया था उसका रोल नंबर राइट करेंगे तो उसकी 0% है, क्योंकि उसने एक भी अटेंडेंस नहीं लगाई है. ओके, देन डिस्प्ले स्टूडेंट करेंगे फिफ्थ चॉइस, तो डिस्प्ले हो जाएंगे स्टूडेंट. एक की एक परसेंटेज है, मतलब एक अटेंडेंस लगी हुई है, मोहित की 0 है. ओके, देन एग्जिट कर देंगे अपने attendance management system से. Okay, system closed. Thank you for watching this. We will meet in our upcoming video of Python development series. So thanks for watching. Okay.